Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome again. Guys, in this particular session, we are going to talk about INIFS, the very first paper which we are going to face on your upcoming JIB November 2025 examination. So, what should be your remaining days strategy and how you should prepare for this particular paper that we are going to discuss in this session, right? So, this paper is very important. Reason being, first, this is the very first paper which we going to face, and it will boost your morale once you'll score 65-70 in this particular paper, right? The importance is like next week you guys are going to face two paper back to back. If you'll score 60-65 or plus, then you'll get that much of confidence for the remaining two papers in 1 week. और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे आपका chances बनेंगे to clear this examination in single attempt, right? So what are the requirement of this particular paper and the focus areas and others that we are going to discuss in this particular session. Okay, one thing which I'll always suggest you, right? So this is something key. If you are going for the very first time, so do not compare this paper with your banking awareness preparation or general awareness preparation during the examination. That is completely different. Though that is going to help you, but the level will be आपका full of application based question or statement based question that you have to take care, right? So what I can suggest you कि आपको you have to work on the concept part first, ठीक है? So first you have to work on the concept part, ठीक है? Then go for the unit wise practice and then आपका weekly revision and then आपका mock test and others, ठीक है? So we have 4 modules which are generally part of this particular one. Out of 4 modules, you will get maximum question based on financial product and services, and this can be done through the more and more practice after going through the basic summary things and all, okay? Because 17 units are generally part of this one, okay? The another important unit is आपका or module is basically मॉड्यूल 2 विच इज मॉड्यूल बी विच इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट थिंग्स, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी because the question based on this particular one again 20 to 25 marks question, and every question will be आपका statement based. Most of the question will be for 1 marks and 2 marks, maximum 2 marks question you will see based on this particular unit. Then module A and module C, especially module C, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू वंस आपका विद द बेसिक समरी एंड ऑल, ठीक है? एंड देन प्रैक्टिस अगेन. ये आपका प्रैक्टिस, दिस कैन बी डन थ्रू प्रैक्टिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो थ्रू द प्रैक्टिस, ठीक है? तो ये 4 मॉड्यूल हमारे पास हैं. चारों मॉड्यूल्स में लेट्स टॉक अबाउट द unit wise practice also, ठीक है? The important units which at least you have to go through once. So when it comes to module A, from module A you can see the question based on sectors of Indian economy, ठीक है? You'll definitely get आपका 2 to 3 marks question, one question based on the differences between different sectors like primary, secondary, tertiary, or some most of the time it is आपका quaternary and quinary, ठीक है? So this is get asked so many times. Planning wala unit is like you can go through the sources आपका through which government they generally fund their plans and all, that get asked so many times. Apart from this priority sector, this you will cover in PPB, तो इसके लिए स्पेशल आपको स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? Then we have economic reforms because this is something which will be part of your module C also, especially Nasimum Committee 1 and 2 and other economic reforms or other financial market reforms, that is important. Foreign trade policy, यहाँ पे if you open your book, they have given to last foreign trade policy आपका 15-20, just avoid that particular one, ठीक है? करंट वाले को भी ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, बट द गोल एजेंडाज ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड ऑल दैट इज बिट इंपॉर्टेंट, ठीक है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, especially IMF, World Bank, WTO, and an overview about the regional cooperative cooperations आपका like SAARC, ASEAN और आपका G20 and others, ठीक है? Climate change and sustainable development, every time it get asked. Issue facing Indian economy also, there is an important subtopic, ठीक है? Now when it comes to module B, so module B, as I told you, like this is full of concepts, ठीक है? So you have to focus on this part. From here you will get micro versus macro or type of economies like command and others, their feature and all. So you can expect at least 3 months. Demand and supply, very important units.
एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग अराउंड द थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, ऑन एन एवरेज 6 marks क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट और मोर देन दैट बेस्ड ऑन दीज टू टॉपिक. ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन, 2 क्वेश्चन अगेन. वन इज अबाउट द आपका सप्लाई ऑफ मनी M1 M2 M3 M4. ठीक है, अनदर वन इज आपका कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, अगेन 2 to 3 marks. ठीक है, बिजनेस साइकिल वेरी स्मॉल वन, सो डुएबल. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आई होप you have gone through this particular one so many times, and even this one also. ठीक है, so when you once you plan the fiscal policy, simultaneously study the budget also. ठीक है, the third one is आपका module C. This is something which can be done through the practice itself. ठीक है, तो यहाँ पे 2 topics और 3 topic which I'll suggest कि जिनका concept आपको पढ़ना ही पढ़ना है. जैसे we have BR Act and this, we have DFIs और आपका MFIs and this. ठीक है, ये पोर्शन जिनका कॉन्सेप्चुअल, रेस्ट यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ आपका प्रैक्टिस ऑल्सो. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मॉड्यूल डी, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 17 यूनिट्स आर देयर. सो हियर वी हैव मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, यू कैन अवॉइड दिस पार्ट. ठीक है, देन वी हैव फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मीन डेट मार्केट, आपका कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स. ठीक है, then interconnection between these market, you'll definitely get question based on each and every single unit. Mostly the variety of question will be half marks, 1 marks and 2 marks. ठीक है, this is the only module आपका जहां से सारे varieties के question मिलेंगे, and you can expect at least आपका 35 to 40 question for 30 to आपका 35 marks. ठीक है, because half marker question will be there आपका. ठीक है, तो what you can do, either you can, the best way is to start with module A, B, C, D, or else what you can do, first complete this module D, then A and then B, then आपका C. ठीक है, it will hardly require 20 to 25 dedicated classes for completion of these all 45 units of your IN IFS, because some units are very small, some unit are at moderate level. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान योर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, आई विल बी डूइंग लाइव सेशन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, weekly basis. This week we'll be doing 2 session, sorry, 1 session. From next week onwards we'll be doing 2 session. I have already uploaded a concept summary for module A. आई होप आप सभी ने देख लिया होगा. ठीक है, पीडीएफ उसका मैं नहीं दूंगा बिकॉज अगर मैं पीडीएफ दूंगा आप पढ़ेंगे नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं. हाँ, वट एवर सेशन विल बी डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहिए तो ऐप पे ऑलरेडी है वैसे मॉड्यूल वाइज आपका सारा रिविजन का, बट द इंटेंशन इज लाइक कि आपको थोड़ा सा उसको देखना ही देखना है. ठीक है, जब आप देखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत. लाइक इट्स अ 4 hour वीडियो ओनली. ठीक है, सो इफ यूल कम टू दिस आई विल शो यू. ठीक है, सो if you'll open this particular one, if you'll come to आपका GIB CIB prep is there. ठीक है, if you'll open this particular website, ठीक है, you can see the your आपका YouTube link here. ठीक है, so if it comes to the YouTube, so you can see I have done this particular one, I have uploaded this particular one already. ठीक है, तो देखो यहाँ पे I have done this session for 4 hour 46 minute. If you'll play in 1.5x means आपका 3 hours max to max. So you can cover up this particular one. So this is something that at least आपका downside things which I'm expecting from all of you. Please do watch these particular things. अगर अभी भी नहीं देखा तो आज इसको complete कर लीजिए, क्योंकि कल से आपका यूनिट, कल हम आपका यूनिट 1 and 2 कवर करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपका सेशन करेंगे. सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड डाउट ऑल्सो. ठीक है, सिमिलरली दिस सैटरडे विल गेट फॉर AFM बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आपका विल बी प्रैक्टिसिंग आपका AFM ऑल्सो. देन संडे यू विल गेट फॉर आपका B. ठीक है, तो till Saturday I'll make sure कि you'll get coverage of entire module A. So if you'll follow these particular things on regular basis, and there are some playlists also if you are going in advance, so you can watch these particular playlists there where we have done things. आपका एक पूरा complete set जो आपको वहाँ पे already मिल जाएगा. ठीक है, तो start preparing from today in itself. Do not delay, बिकॉज जितना डिले करेंगे उतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा. ठीक है, दिस इज नाउ, जैसे पहले आपका होता था कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे. ठीक है, डू नॉट रिलाई ऑन दोज मैकमिलन क्वेश्चन. ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहते हैं. रियलिटी में हाफ मार्क्स के क्वेश्चन भी वैसे नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, और बहुत ही कम क्वेश्चन वहां से मिलेंगे. तो मेरा सजेशन है कि योर प्रायोरिटी, लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी इज कॉन्सेप्ट. दिस ऑल्सो लाइक अ वीक बिफोर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑल्सो आई विल टेल यू कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ लो. ठीक है, भले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ या ना कर पाओ, तो कॉन्सेप्ट्स आर मस्ट गो. आई एम नॉट टेलिंग कि गो फॉर द एंटायर बुक एंड और नो, दैट एवरी topic they have some unique areas, some important areas. Just work on those things that I have covered in the these concept videos and all. ठीक है,
then follow the regular sessions. Believe me, you will be able to score very good marks in your upcoming examination. All right, so I'll see you tomorrow at 8:30. So we'll be doing session from 8:30 to 9:30. Okay, that will be the regular time. Later on we'll increase the time also from next week onwards, right? So guys, wish you all the very best for your preparation. लग जाइए बढ़िया से अभी से, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कीजिए, एग्जाम टाइम में थोड़ा सा कम एफर्ट डालने पड़ेंगे, राइट? So see you tomorrow guys, and wish you all the very best for your preparation. Thank you.